हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूनियन बजट के बारे में बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन यूनियन बजट के ऊपर लेंगे। इसके टोटल अपन यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आज लेंगे, ओके, क्योंकि वो यूनियन बजट के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग होगी। ओके, तो जो भी 2024-25 का यूनियन बजट है उसके बारे में अपन यहाँ पे आज क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और भी मैंने एनआईसीएल की भी प्लेलिस्ट बना चुकी है कि यहाँ पे अगर किसी को भी रीजनिंग प्लस मैथ्स की अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो एनआईसीएल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आप देख सकते हो, ताकि आपके और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, इसके बाद मैं कंटिन्यू मॉक पेपर भी बनाऊंगा, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बनाने वाला हूँ। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली वीडियोस मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु प्रेजेंट द यूनियन बजट इन इंडिया। यूनियन बजट अगर कौन प्रेजेंट करता है, तो यूनियन बजट जो प्रेजेंट करते हैं वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होती है, ओके, द प्रेजेंटेड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूजुअली इन पार्लियामेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ February. ओके, नेक्स्ट सेकंड, when is the union budget typically presented in India। तो यहाँ पे भी जो आंसर है वो है 1 फरवरी। ओके, मतलब जो फर्स्ट डेट होती है फरवरी की, वही पे अपन क्या करते हैं, बजट को प्रेजेंट करते हैं। और प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट थर्ड, देखिए यहाँ पे थर्ड बोला द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए आंसर है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, देखिए द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द पार्लियामेंट टिपिकली अ डे बिफोर द यूनियन बजट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, द इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश इन हाउ मेनी वॉल्यूम। तो यहाँ पे आंसर है 2 वॉल्यूम। ठीक है, देखिए द इकोनॉमिक सर्वे इज ट्रेडिशनली पब्लिश इन 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 is overview of the economy and volume 2 is a sector analysis and policy recommendations. Okay, next fifth, which of the following is not a component of union budget। अब इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, फिजिकल डेफिसिट बजट एंड एक्सपेंडिचर बजट। तो यहाँ पे जो है वो फिजिकल डेफिसिट बजट जो है वो कंपोनेंट नहीं है यूनियन बजट का। देखिए the union budget consists of revenue budget means detail of income, capital budget means detail of long-term investment, and expenditure budget means allocation of fund. But there is no separate fiscal deficit budget. Okay. Next 6. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइमरी गोल ऑफ यूनियन बजट, ओके, इज टू मैनेज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए आंसर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, देखिए द यूनियन बजट एम टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर while fostering growth, inflation control and poverty reduction। okay, next seventh, अब सेवंथ यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज द की सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आंसर है इनकम टैक्स। ओके, देखिए इनकम टैक्स इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, लिमिट ऑन द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। ओके, नेक्स्ट एट, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्विस का मेन पर्पस क्या है, टू एक्सेस इकोनॉमिक ट्रेंड एंड रिकमेंडेड पॉलिसी मेजर्स। देखिए इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक ओवर द पास्ट ईयर, एनालाइज ट्रेंड एंड रिकमेंडेड पॉलिसी मेजर टू एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, which document contain the detailed breakdown of the government tax revenue। तो इसका जो आंसर है वो है यूनियन बजट। ओके, देखिए यूनियन बजट कंटेन द डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्स इंक्लूडिंग टैक्स रेवेन्यू लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नेक्स्ट टेंथ, द यूनियन बजट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनियन बजट का डॉक्यूमेंट कौन सा है, सभी से यहाँ पे देखो टैक्स पॉलिसीज है, इकोनॉमिक प्लानिंग है एंड फिजिकल मैनेजमेंट। इसलिए जो आंसर है क्या है, ऑल ऑफ द। देखिए यूनियन बजट डील विद द टैक्स पॉलिसीज, फिजिकल मैनेजमेंट एंड आउटलाइन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर कमिंग फिजिकल ईयर। ओके, नेक्स्ट 11th बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द कैपिटल बजट ऑफ यूनियन बजट। ओके, तो यहाँ पे आंसर है लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, देखिए कैपिटल बजट इंक्लूड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लॉन्ग टर्म असेट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, investment in public enterprises and loan for development project। Okay, next 12th,
व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट? तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। देखिए, fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total revenue, excluding borrowing. It is an indicator of the government borrowing needs. Okay. Next, 13. What does the revenue deficit indicate in the union budget? So revenue deficit क्या करता है? Shortfall in revenue to meet current expenditure. Okay. देखिए, revenue deficit occur when the government revenue is insufficient to cover its regular expenses. This does not include capital expenditure. Okay. Next, 14. Which of the following is not considered as a part of union budget expenditure? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने को दिए। सब्सिडीज, गवर्नमेंट सैलरीज, नेशनल डिफेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू असेट। आंसर है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट। देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट इज a typical part of transfer and grant from the central government, not part of union budget own expenditure. Okay. नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है कि विच डिपार्टमेंट मैनेज द यूनियन बजट प्रिपरेशन। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड प्लानिंग कमीशन। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट विच इंक्लूड कंसल्टेशंस विद द अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। ओके। नेक्स्ट 16। What does the tax to GDP ratio indicate? So tax to GDP ratio indicate means क्या होता है? Proportion of government revenue generated from taxes related to the GDP. देखिए, the tax to GDP ratio reflect how much tax the government collect compared to the nation GDP, which indicate the efficiency and scope of tax system. Okay. Next, 17. Which of the following is considered a positive fiscal indicator? आंसर है यहाँ पे सस्टेनेबल लेवल ऑफ पब्लिक डेट। ओके, पॉजिटिव फिजिकल इंडिकेटर यहाँ पे देखते हैं। सस्टेनेबल लेवल ऑफ पब्लिक डेट इज अ पॉजिटिव फिजिकल इंडिकेटर एज इट सजेस्ट दैट गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट्स बोरोविंग वेल विदाउट बर्डनिंग फ्यूचर जनरेशंस। ओके। नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है यहाँ पे। तो फर्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटीज, देन थर्ड है डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इनकम टैक्स। तो इसका जो आंसर है नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर देखते हैं तो वो है डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड अर्निंग फ्रॉम द सोर्स अदर देन टैक्सेस सच एज डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, फीस, फाइन एंड अदर चार्जेस। ओके। नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन द यूनियन बजट। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सेकंड वाला। इट रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ओके, देखिए, द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड हाउ टैक्स रेवेन्यू शुड बी शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ensuring a fair distribution based on fiscal requirements. Okay, next 20। What is the effect of union budget of inflation? तो आंसर है it can control inflation through fiscal policies. Okay, देखिए, the union budget can control inflation by managing government spending, adjusting tax rate and implementing policies to regulate the money supply in the economy. Okay, next 21। Which major focus of India Union Budget 2024-25? आंसर है infrastructure development. Okay, देखिए, infrastructure development has been the major focus in the Union Budget 2025 with significant allocation made for infrastructure project like road, railway and digital infrastructure. Okay, next 22। The union budget has a special provision for which of the following sector? आंसर देखिए यहाँ पे चार्ज दिए हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट। तो आंसर है ऑल ऑफ द। देखिए, द यूनियन बजट allocate funds for various critical sectors including education, health, defense and rural development. Okay, next 23। Which financial year does the union budget pretend to? तो आंसर यहाँ पे देखिए फिस्कल ईयर है। ओके, द यूनियन बजट प्रिटेंड द फिस्कल ईयर विच इन इंडिया run from 1st April to 31st March of the following year. Okay, next 24।
यहाँ पे दिया है द इकोनॉमिक सर्वे एस्टिमेट द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, देखिए द इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द करंट रेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस। ओके, नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट रेवेन्यू सोर्स। यहाँ पे देखिए आंसर है सेल्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, देखिए द सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इज द मेथड ऑफ बोरोइंग फंड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट, नॉट अ रेवेन्यू सोर्स इन द यूनियन बजट। ओके, नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज कंसिडर्ड एज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन द यूनियन बजट। तो देखिए चार है अपने पास, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो आंसर है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके, देखिए जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स लेव्ड ऑन द गुड सर्विस विच इज पेड बाय कंज्यूमर बट allocated but collected by businesses and forward to the government. Okay, next 27। the union budget is classified into which two main categories? Answer है current and capital budget. Okay, देखिए the union budget is classified into the current budget, revenue and receipt expenditure, and capital budget, loan, investment and public debt management. Okay, next 28। which of the following is the primary aim of the union budget fiscal policy? आंसर है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। इसका जो आंसर है वो क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। देखिए फिस्कल पॉलिसी इज द यूनियन बजट फोकस ऑन मैनेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, stabilize the economy and promote economic growth. Okay, next 29। what is the significance of कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सेकंड जो है इट इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू स्पेंडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट such as infrastructure project, equipment and development of asset that help in the government of economy. Okay, next 30। to term revenue deficit is related to which aspect of the union budget? Answer है government shortfall in revenue to meet current expenses. Okay, देखिए revenue deficit refers to the situation where the government current revenue like taxes is less than its current expenditure. Okay, next 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द एक्सपेंडिचर बजट इन द यूनियन बजट? देखिए यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है इट इंक्लूड बोथ करंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, देखिए कैपिटल बजट इज द एक्सपेंडिचर बजट इंक्लूड बोथ करंट एक्सपेंडिचर मींस डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट 32। The Union Budget 2024-25 has focus on which of the following sectors? तो देखिए यहाँ पे चार सेक्टर्स है अपने पास, एग्रीकल्चर सब्सिडीज, हेल्थ एंड एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंडिया, टैक्स रिफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंडिया। ओके, देखिए यूनियन बजट 2024-25 has placed a significant emphasis on infrastructure development and enhancing the digital India initiative to promote technological innovation and growth. Okay, next 33। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन द यूनियन बजट? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस में जो सेकंड है इट सेट टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट। ओके, देखिए द यहाँ पे जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एम टू एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन by setting target for the reducing fiscal deficit, managing public debts and ensuring sustainable government finance. Okay, next 34। the union budget also include provision for subsidies. Which of the following is example of government subsidies? तो इसका जो आंसर है वो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चर स्कीम। ओके, देखिए subsidies are provided by government to reduce the cost of goods and service for a specific sector such as subsidies in agriculture, energy and food. Okay, next 35। which organization play a major role in implementing the fiscal policy outlined in the union budget? इसका जो आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देखिए आरबीआई प्ले द की रोल इन implementing fiscal policies
particularly managing and monetary policy, interest rate, inflation, and regulating financial market. Okay. Next, 36. What is meant by deficit financing in the union budget? तो आंसर है यहाँ पे देखिए, प्रिंटिंग न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट. देखिए, deficit financing involve raising fund to cover the shortfall in revenue through borrowing or by printing new currency, which can lead to inflationary pressures. Okay. Next, 37. Which of the following are the key component of economic survey? तो इकोनॉमिक सर्वे का मेन कंसेप्ट क्या है? एनालिसिस ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रोथ. ओके. देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे फोकस ऑन एनालाइजिंग इंडिया जीडीपी ग्रोथ, providing an overview of economic situation and offering policy recommendation to enhance economic performance. Okay. Next, 38. अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टारगेट सेट इन द यूनियन बजट रिलेटेड टू द ग्रीन ग्रोथ. तो ग्रीन ग्रोथ मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इंक्रीज अलोकेशन टू रिन्यूएबल एनर्जी. ओके. देखिए, यूनियन बजट 2024-25 सेट्स टारगेट फॉर प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ, including substantial allocation for renewable energy project, electric vehicle, and green technologies. Okay. Next, 39. Which sector is a major focus of Atmanirbhar Bharat, means self-reliant India in the union budget? तो आंसर है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है. देखिए, आत्मनिर्भर भारत फोकस ऑन एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस ऑफ इंडिया with strong emphasis on boosting the MSME sector through reform, financial assistance, and access markets. Okay. Next, 40. What is fiscal deficit target in the union budget? तो आंसर है the difference between the government and total expenditure. Okay, देखिए, the fiscal deficit target is the difference between the government total expenditure and total revenue. It is important indicator of government borrowing and fiscal health. Okay. Next, 41. Which tax was abolished as a part of Union Budget 2024-25? तो इसका जो आंसर है देखिए यहाँ पे है वेल्थ टैक्स. ओके. देखिए, वेल्थ टैक्स इज एबोलिश बाय द गवर्नमेंट इज अर्लियर ईयर एंड द यूनियन बजट 2024-25 did not propose reintroducing it, focusing on improving tax, income tax, compliance, and corporate reform instead. Okay. Next, 42. Which of the following is true about the concept of fiscal space in the union budget? तो आंसर है यहाँ पे देखिए, the ability to increase government spending without crossing the fiscal deficit. Okay. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, the fiscal space refers to the government ability to increase spending without exceeding its fiscal deficit target, often due to healthy tax revenue or low debt level. Okay. Next, 43. Which of the following policies emphasize in the union budget to boost infrastructure sector? यहाँ पे जो आंसर है वो है ease of doing business reform. ठीक है. देखिए, the union budget emphasizes the reform to improve the ease of doing business, including simplifying regulations, enhancing labor law, and promoting ease of investment in manufacturing sector. Okay. Next, 44. The Union Budget 2024-25 focus on which demographic for target welfare measures? तो आंसर है farmer and rural populations. Okay, populations. Okay, the Union Budget 2024-25 include targeted where welfare measures for farmer and the rural population, focusing on agriculture reform, financial support, and rural development program. ठीक है. Next, 45. Which of the following measure was adopted in the union budget to improve financial inclusion? आंसर है launch of digital banking initiative in rural area. Okay, देखिए, the union budget 2024-25 include measure to improve financial inclusion such as launch of digital banking initiative aimed at extending banking services to rural and underserved area. Okay. Next, 46. The economic survey estimate the overall performance of the economy for which period? आंसर है financial previous financial year. ठीक है. देखिए, the economic survey typically evaluate the economic performance of the previous financial year, providing insights into growth rate, challenges, and key economic indicator. Okay.
Next, 47. What does GIC stand for? Often mentioned in union budget related to government borrowing. देखिए, ग्रॉस सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर एंड जनरल सर्विस. तो आंसर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी. GSEC refers to the government security which are bond issued by the government to borrow fund from public to finance budget deficit. Okay. Next, 48. What is the primary goal of Pradhan Mantri Awas Yojana in the union budget? यहाँ पे है ensuring affordable housing for all. ठीक है. देखिए, it aims to provide affordable housing to urban poor and rural population with the focus on making housing more accessible and available through subsidies and loan. Okay. Next, 49. Which of the following measures is the union budget 2024-25 aim at? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. आंसर है प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग. देखिए, द यूनियन बजट एम्फासिस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एनहांस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी particularly for youth to boost employability across sector. Okay. Next, 50. What does the economic survey emphasize as a critical for India long-term economic growth? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ठीक है. देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन as a critical driver of for India long-term economic growth, fostering productivity and efficiency and competitiveness. Okay. Next, 51. What is the primary objective of fiscal deficit target in union budget? The answer is to balance the revenue and expenditure of the government. Okay. Next, 52. अब यहाँ पे बोला है कि which of the following is the major component of Atmanirbhar Bharat initiative as mentioned in union budget. तो यहाँ पे है ensuring self reliance in the manufacturing sector. देखिए, आत्मनिर्भर भारत focus on reducing dependency on import by promoting self reliance especially in manufacturing. ठीक है. The initiative encourage domestic production, innovation and use of indigenous resources. Okay. Next, 53. What is the primary aim of National Infrastructure Pipeline (NIP) introduced in the Union Budget? तो इसका जो कंसेप्ट था वो था प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. देखें, the National Infrastructure Pipeline aim to invest in projects that improve physical infrastructure across the country. It focus on encouraging public-private partnership to enhance the quality and scale of infrastructure project. Okay. Next, 54. Which sector receives significant funding for green energy initiative in Union Budget 2024-25? Answer है renewable energy. Okay, देखिए, the government allocates significant fund for renewable energy project including solar and wind energy to meet climate goal and reduce reliance for fossil fuel. Okay. Next, 55. Which of the following is the key feature of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is discussed in the Union Budget? तो इसका आंसर है ensuring financial inclusion by offering banking access to unbanked citizen. Okay, देखिए, it aims to provide universal access to banking facility, ensuring that all citizens, especially from rural and economical backward region, have access to banking service and financial products. Okay. Next, 56. In the Union Budget 2024-25, what is the primary focus on Startup India initiative? तो इसका आंसर है to create more conducive environment for startup by simplifying regulation. Okay, देखिए, the Startup India initiative focus on fostering entrepreneurship by providing ease of doing business, simplifying tax regulation, and providing more accessible regulatory environment for new businesses. Okay. Next, 57. Which financial instrument was introduced in the Union Budget 2024-25 to support investment in sustainable development project? तो इसका जो आंसर है वो है ग्रीन बॉन्ड्स. ओके, देखिए, ग्रीन बॉन्ड आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू रेज फंड स्पेशली फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, pollution control and other environmentally sustainable initiative. This align with the India commitment to addressing climate change. Okay. Next, 58. The Economic Survey of India is presented annually
बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर है पार्लियामेंट बजट सेशन। ठीक है, देखिए द इकोनॉमिक सर्वे इज टिपिकली प्रेजेंट इन पार्लियामेंट अ डे बिफोर यूनियन बजट, providing an overview of country economic performance and trends which help inform government fiscal planning. Okay, next 59. The PM Gati Shakti initiative mentioned in union budget aim to improve. Okay, the PM Gati Shakti means क्या होता है? Connectivity between various mode of transport. Okay, the PM Gati Shakti is initiative designed to improve logistic and connectivity between different mode of transport like as road, railway, ports and airports. This would reduce transportation cost and improve supply chain efficiency. Okay, next 60. Which of the following sector was allotted significant fund in union budget 2024 to 25 to boost employment? आंसर है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, देखिए द गवर्नमेंट फोकस ऑन बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एमिंग टू एनहांस ह्यूमन कैपिटल and make the workflows more adaptable to evolving job market. Okay, next 61. अब यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज एम एट रिड्यूसिंग द कंपाइलेंस बर्डन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया? तो आंसर है एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। ठीक है, देखिए द यूनियन बजट एम्बेसिस रिफॉर्म अंडर एज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव which includes simplifying regulation, reducing paperwork, and streamlining business process to make it easier for SME to operate in India. Okay, next 62. अब यहाँ पे बोला है इन यूनियन बजट 2024-25 व्हाट वाज द की फोकस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर? आंसर है स्ट्रेटनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, देखिए द गवर्नमेंट अलॉटेड सिग्निफिकेंट फंड टू इंप्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसिंग ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इंक्लूड बिल्डिंग more hospital, improving healthcare delivery in rural area, and enhancing the overall healthcare capital capacity of the nation. Okay, next 63. What was the major focus of 2024-25 union budget to promote India role in global digital economy? तो आंसर है promotion of digital India and smart cities. Okay, देखिए यूनियन बजट फोकस ऑन एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, improving internet access and developing smart cities with advanced digital infrastructure to bolster India position in global digital economy. Okay, next 64. The Union Budget 2024-25 proposed a significant increase in the allocation for which of the following sector? तो आंसर है renewable energy. The major portion of Union Budget 2024-25 was allocated for renewable energy development, including solar and wind energy to address climate change and reduce reliance on fossil fuel. This reflects the government commitment to green energy and sustainable development. Okay. Next, 65. Which of the following policy was introduced in the Union Budget 2024-25 to support the electric vehicle in industry? तो आंसर इसका introduction of financial incentives for EV manufacturer and buyer. देखिए, the Union Budget initiative electric vehicle sector by offering subsidies and tax break for both manufacturer and consumer, promoting the adoption of EV to reduce carbon emission and dependence on fossil fuel. Okay. Next, 66. Which new digital initiative was highlighted in the Union Budget 2024-25 to improve the financial inclusion of citizens? तो आंसर है expansion of digital banking service in rural area. Okay, देखिए the Union Budget aim to improve financial inclusion by expanding digital banking service in rural area, providing unbanked population with access banking facility and promoting financial literacy. Okay, next 67. Which of the following sector was granted the largest allocation for development under the Union Budget 2024-25? तो आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, देखिए the Union Budget 2024-25 allotted the highest fund toward the infrastructure development, including road, railway, airport, and port, to boost economic growth, job creation, and overall connectivity in the country. Okay, next 68.
the national hydrogen mission mentioned in the union budget aim to आंसर है reduce the cost of green hydrogen production. ठीक है, देखिए the national hydrogen mission focus developing sustainable hydrogen economy by reducing promotion of cost of green hydrogen, which seen as a key solution for decarbonizing sector like transportation and industry and power generation. Okay, next 69. Which of the following measure is a part of union budget to strengthen the agriculture sector? तो आंसर है provision of credit facility for agriculture project. Okay, okay. The union budget 2024-25 include increased provision for credit facility aimed at supporting agriculture project, including loan for farmers and initiative to modernize agriculture infrastructure and technology. Okay, next 70. Which of the following was proposed in the Union Budget 2024-25 to enhance the age of living for senior citizens? तो आंसर है tax exemptions on income for senior citizen. Okay, देखिए the government proposed tax relief for senior citizen by offering increased exemption and deduction on income to enhance their financial well-being and age of living during retirement. Okay, next 71. अब बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फोकस ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इन द टाइम बजट 2024-25. आंसर है improve of highway, ports and railway. Okay, the union budget 2024-25 priorities infrastructure development for including highway, railways and ports. Okay, next 72. Which of the following social security scheme was emphasized in the Union Budget 2024-25 to help vulnerable sections of society? तो इसका आंसर है आयुष्मान भारत. ओके, देखिए यूनियन बजट allocate additional funds for Ayushman Bharat, a flagship health insurance scheme aimed at providing free healthcare service to low-income families across India, further expanding its reach and benefits. Okay, next 73. The Union Budget 2024-25 allocated significant fund for development of which of the following sector? तो आंसर है startup and innovation. ठीक है, the Union Budget 2024-25 focus on promoting the startup ecosystem by allocating fund for innovation and simplifying regulation to boost entrepreneurship, job creation and technological advancement in India. Okay, next 74. Which of the following is the key feature of national monetization pipeline introduced by in the Union Budget 2024? तो आंसर है raising fund by monetizing public sector assets. ठीक है, देखिए the NMP, okay, National Monetization Pipeline aim to generate revenue by leasing or monetization underused, okay, public sector assets such as infrastructure and land to private players while maintaining government ownership. Okay, next 75. अब यहाँ पे बोला है कि what is the significance of tax audit reform introduction the union budget 2024-25 for small business? तो आंसर है exemption from tax audit from small business under a certain term thresholds. ठीक है, देखिए the union budget 2024-25 propose aim to raise fund turnover threshold for small business to get exemption from tax audit, reducing the compliance burden and promoting ease of doing business. Okay, next 76. The Union Budget 2024-25 emphasize the importance of which of the following to boost India global competitiveness? तो यहाँ पे आंसर जो है वो है research and development in technology. Okay, the Union Budget stressed the need for increased investment research and development, particularly in the technology and innovation. Okay, to make India more competitive in global economy, focusing on cutting edge industries like artificial intelligence and quantum computing. Okay, next 77. Which of the following is a new tax proposal in Union Budget 2024-25 aim at encouraging saving among individual? The answer है introduction of tax free saving account. Okay, देखिए the Union Budget 2024-25 introduced new tax-free saving account aimed at incentivizing individual to save more by offering tax exemption on interest earned and principal amount.
Next, 78. What significant changes was made to the goods and service tax structure in Union Budget 2024-25? तो आंसर है simplification of GST compliance for small business. Okay, देखिए, the Union Budget 2024-25 include provision to simplify GST compliance for small business, including reducing paperwork, improving filing process, and raising turnover threshold for GST registration to ease burden on micro and small enterprises. Okay. Next, 79. In the Union Budget 2024-25, which of the following measure was taken to promote export growth in India? तो आंसर है reform in the export credit guarantee scheme. ठीक है, देखिए, the government introduced reform to export credit guarantees corporation to improve risk management for exporters and reduce the credit cost of credit, thereby boosting export growth in various sector of the economy. Next, 80. The Union Budget 2024-25 emphasized the creation of which of the following facility faster development in rural area? तो आंसर है स्मार्ट विलेज विद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, देखिए, the Union Budget focus on creating smart village by providing digital infrastructure which include internet connectivity and e-governance service to enhance rural development and improve access to education, healthcare, and employment opportunities. Okay. Next, 81. Which of the following sectors saw an allocation of substantial fund for green energy project in the Union Budget 2024-25? Okay, तो इसका आंसर है renewable energy infrastructure. Okay, देखिए, the Union Budget 2024-25 focus on enhancing renewable energy capacity, substantial fund allocated for the solar and wind energy. Okay, project. The government commitment to achieving net zero emission by 2070. Next, 82. What key proposal in the Union Budget 2024-25 aim to address the problem of air pollution in urban center? तो आंसर है strengthening the National Clean Air Program. Okay, देखिए, Union Budget 24-25 propose strengthening the National Clean Air Program to reduce air pollution in urban center through better monitoring, strict regulation, and enhancing air quality management practice. Okay. Next, 83. Which of the following was a major highlight regarding fiscal consolidation in Union Budget 2024-25? Answer है strict adherence to fiscal deficit target 4.5% of GDP. देखें, the Union Budget 2024 emphasizes the fiscal consolidation by maintaining the fiscal deficit target at 4.5% of GDP, focusing on managing public finance responsibility while ensuring adequate funding for critical development initiative. Next, 84. Which of the following economic indicator was forecasted in Economic Survey 2024 to show the most significant improvement in next fiscal year? तो आंसर है GDP growth rate. Okay, देखिए, according to Economic Survey 2024, India GDP growth rate was projected to show significant improvement due to robust growth in manufacturing, service, and export supported by the investment. Okay. Next, 85. The Union Budget 2025 proposed new initiative Digital India, aim at promoting digital literacy in rural area. What is the primary goal of this initiative? तो यहाँ पे आंसर है to offer e-learning opportunities and promote digital literacy. Okay, देखिए, Union Budget 2024-25 proposed enhancing digital literacy program, especially in rural area, to bridge the digital divide, create e-learning opportunity, and empower rural population with digital skills. Okay. Next, 86. Which of the following was the key sectors identified in the Economic Survey 2024 as contributing to India's export growth? Answer है pharmaceutical and chemical. Okay. The Economic Survey 2024 highlight the pharmaceutical and chemical industry as the key driver of India export growth, benefiting from the increased global demand for medicine and healthcare products, as well as India established manufacturing capabilities. Okay. Next, 87.
What initiative in the Union Budget 2024-25 focus on improving financial inclusion in the rural economy? Answer है introduction of low cost credit scheme for farmer. Okay, देखिए the Union Budget 2024 introduced low cost credit scheme targeted at farmer to improve financial inclusion and provide easier to credit supporting agriculture growth and rural development. Okay, next 88. Which of the following sector did the Union Budget 2024-25 propose develop under National Infrastructure Pipeline? तो आंसर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, देखिए the Union Budget proposed significant investment in digital infrastructure under National Infrastructure Pipeline, including improvement to broadband connectivity, roll out 5G network to enable faster and more widespread internet access. Okay, next 89. Which of the following measure was announced in Union Budget 2024-25 to strengthen the education sector? तो आंसर है allocation of fund for skill development and vocational education. ओके, देखिए यहाँ पे बोला है बजट 2024-25 emphasizes skill development and vocational training and additional funding for program that aim to bridge the skill gap in labor market and equipping the youth in employable skill. Okay, next 90. The Union Budget 2024-25 proposed an increased focus on which of the following to promote economic growth in rural area? Answer है investment in infrastructure, rural infrastructure and connectivity. Okay, देखिए 24-25 focus on increasing investment in rural infrastructure such as road, electricity and water supply system to boost economic activity, enhancing living standard and promote sustainable growth in rural areas. Okay, next 91. Which of the following was the key feature of the Union Budget 2024-25 related to the health sector? Answer है increase allocation for National Health Mission. Okay, देखिए it allocate additional fund to National Health Mission with the goal of strengthening healthcare infrastructure and improving health outcomes, especially in rural and underserved area. Okay, next 92. According to the Economic Survey 2024, which of the following was identified as the most significant factor contributing to India resilience during the global economic uncertainty? तो आंसर है robust export growth. ठीक है, देखिए the Economic Survey 2024 highlight India robust export performance as a key factor that contributed to its economic resilience despite economic challenges driven growth by pharmaceutical and in IT sectors and other pharmaceuticals. Okay, next 93. What a major initiative under Union Budget 2024-25 to promote women entrepreneurship in India? तो आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, देखिए the Union Budget 2024 introduced women entrepreneurship development program aim at promoting financial and mentorship support to women entrepreneur, enhancing access to credit and encouraging their participation in business. Next 94. Which of the following sector received the highest increase in funding in Union Budget 2024-25 to enhance Atmanirbhar Bharat, means self-reliance India? तो आंसर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. ओके, देखिए the Union Budget 24-25 significantly increased funding for defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative aiming to reduce India dependence for the foreign defense equipment and boost domestic products and defense technology. Okay, next 95. Which of the following was identified in the Union Budget 2024-25 as a central pillar of India push toward green energy transition? तो आंसर है solar power capacity addition. Okay, देखिए the Union Budget 2024-25 focus on expanding solar power capacity to drive green energy transition. It proposed investment in solar infrastructure and promote adoption of renewable energy source and meet sustainability target. Okay, next 96. The Union Budget 2024-25 announced the launch of New India scheme aim at improving tourism infrastructure in India. What is the name of this scheme? तो आंसर है स्वदेश दर्शन 2.0. Okay, देखिए the Union Budget 2024-25 proposed launch
Swadesh Darshan 2.0, which aim to improve tourism infrastructure, promote sustainable tourism, and enhance the development of tourist destination across the country, particularly in rural area. Okay. Next, 97. What is the projected growth rate of India GDP for financial year 24-25 as per economic survey? The answer is 6.5%. Okay. देखिए, the 2024 projected India GDP to 6.5 for financial year 24-25, driven strong domestic consumption, government spending, and growth in export despite global economic uncertainty. Okay. Next, 98. Which of the following measure was announced in Union Budget 2024-25 to support agriculture section? तो आंसर है लॉन्च ऑफ अ नेशनल एग्रो प्रोसेसिंग मिशन. ओके, देखिए, नेशनल एग्रो प्रोसेसिंग मिशन टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, promote value added processing, and ensure better return for farmer by strengthening supply chain in agriculture sector. Okay. Next, 99. In the Union Budget 2024-25, what was the major focus regarding urban development? तो आंसर है डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड अफोर्डेबल हाउसिंग. ओके, देखिए, यूनियन बजट 2024-25 फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज विद इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, ड्रिवन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंक्रीज फंडिंग फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना. ओके. नेक्स्ट, 100. What strategy outlined in the Economic Survey 2024 is seen critical to managing India fiscal deficit? Answer है diversification of revenue source through taxation reform. Okay, देखिए, the Economic Survey 2024 emphasizes the importance of diversifying India revenue source through progressive taxation reform such as broadening tax base and improving tax compliance to manage fiscal deficit effectively. Okay. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना मॉक पेपर 2 रहेगा, एंड देन उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.